अनिला ने आपको जैसे बताया कि मैं और तैमूर साहब also both of us are working at Casey's Leibniz Institute in Germany. तो थोड़ा सा अपना करियर पाथ भी हम बताना चाहेंगे ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि हमने कैसे अपनी स्टडीज की और किस तरीके से हम अब यहाँ पे काम कर रहे हैं डेटा साइंस में। Right, so agenda कुछ इस तरह से है कि first of all introduction to us and then identification and then how you can develop your own career path. First step would be identification of your strengths and then identification of aims and goals, choosing your learning path, developing experience in that area, and then finally developing portfolio. So first about myself. So I'm head of big data analytics at Casey's Leibniz Institute, Germany. Previously, I did simple graduation, double maths and physics from Punjab University. Then I did my master's from Patna Jinnah Women University in computer science. Then on HEC scholarship, I did my MS leading to PhD from FAST Islamabad. And my topic was machine learning, evolutionary computation, and optimization. And I did that back in 2010. In terms of career, while doing my PhD, I joined Iqra University Islamabad as assistant professor. Then I also worked as head of the department there from 2009 to 2013. Then we moved to Denmark. In Denmark, I worked as assistant lecturer in 2014 to 2015. Then we moved to Leipzig as a postdoc. And that's where my career to big data started because this postdoc was about big data and data analytics particularly. And then हाजरा अगर आप अपना माइक प्लीज जरा चेक कर लेंगे, थोड़ा करीब हो जाए। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि उनको थोड़ा डिस्टॉर्शन फील हो रहा है। If you can please check. Is it any better now? Yes. Okay, thank you. All right, so Bonn में 4 साल मैंने big data analytics में काम किया. Then I moved to University of Cologne. There also I worked as academic expert in data science, bringing all the experience from the previous jobs and using that for life sciences. And now at Casey's, I'm working for big data analytics for social sciences, data coming from and emerging from social sciences. I have worked on several projects related to big data and artificial intelligence. So their names are Big Data Europe, Big Data Ocean, Big Data in Energy, and Big Data in Biology. And then some also machine learning projects like Bio2Vec, that is biological data को vectorial data में convert करना, and furthermore AI projects. Now I hand over to Dr. Taimoor. Taimoor, you're muted. Can anyone hear me now? Am I audible? Gigi. Okay, thank you. Thank you, Dr. Hajira. So I'm Taimoor Khan, and I'm working as postdoc researcher at Casey's. I joined last year, and I'm basically working on the infrastructure for big data analytics. Previously, I did my bachelor's from PIAS in 2007 in computer and information sciences. My master's degree is in IT from Swinburne University, Australia, and then I did PhD from Bahia University in 2018 in computer science, and I was primarily working with machine learning models and continual learning, which is a rather relative newer version of a subcategory of machine learning, and we applied those techniques on textual data, which falls into the category of NLP. I started as a software/web developer in different organizations and different industrial organizations in Islamabad. And then during my master's, then after completing my master's, I did some work in industry in Melbourne also. Later, when I came to Pakistan after completing master's, I joined CompStats as a lecturer and worked there till 2014. Later, I switched to FAST Newses and worked as assistant professor till last year. And from last year, I'm working as postdoc at Casey's. Just before continuing with the content of the slides, I did few courses on Coursera, by the way, in 2019 and then 20 when COVID started and we had these accounts. I was at FAST back then.
So we were given these accounts to benefit from Coursera. I did few courses and they were very beneficiary, particularly the ones related to online teaching, because this was something that we were not prepared for. And then I also found some courses which were relevant to my area, and I learned a lot, like to Taimoor? study those courses, because in degree programs you do not have this Taimoor? freedom to have such variety of courses. I'm sorry to interrupt. Can you be kindly present in Urdu? Okay, yeah. Yeah, sorry. The slides stuck over here. I cannot move the slide. Okay, so basically, starting with the actual content, हमारा जो main मकसद है, that is to identify your strengths while you start your undergrad degree. The reason why I have this slide is because there are अभी पाकिस्तान में आजकल काफी ज़्यादा different degree programs हैं at the undergrad level, and none of them would give you a particular disadvantage. So this is totally up to you कि आप उसको किस तरह से लेके जाते हैं. If you are starting with computer science, तो उसमें यह है कि आपको कोर के कुछ ज़्यादा कोर्सेज कराए जाते हैं. If you start with data science, so that means कि आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के कोर्सेज हैं वो ज़रा ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे. The same way if you start with software engineering, so एक तो मैं यहाँ से ये चीज़ जो है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि when you do a particular degree program या आप already कर रहे हैं, do not feel yourself at a disadvantage कि आपकी डिग्री का टाइटल इस तरह से है तो इसकी वजह से आप डेटा साइंस में नहीं आ सकते या आपको कोई डिसएडवांटेज होगा. यस, ऑल दीज कोर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैव सम प्लस माइनस, तो वो चीजें आपको खुद से कवर करनी पड़ेंगी, और इस वजह से इट्स ऑलवेज अपॉन यू कि आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर आप काम करें, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल ऑनलाइन, और उसको आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं. So basically covering the depth and breadth is something कि जिसको आपको focus करना चाहिए. You cannot cover everything that is being taught in their degree program, तो आपकी जो इंटरेस्ट जिस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, यू विल रियलाइज कि उसके अंदर काम करने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड आपका चाहिए होगा, विच बेसिकली कवर्स कि आपको ब्रेथ में क्या चीज़ें कवर करनी है. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ये वीकनेसेस जो हैं या ये लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करें और आप उसके ऊपर काम करें, और अपनी डिग्री प्रोग्राम जो भी है उसको विद योर ओन एफर्ट्स ऐसे ट्यून करें कि वो आपको फ्यूचर में जो डेवलपमेंट जिस करियर डायरेक्शन में आप जाना चाहें उसमें आपको हेल्प आउट करें. Okay, so again starting with the same concept के जो basic skills आपको चाहिए. तो पहली चीज तो ये कि अगर आप डेटा साइंस में आना चाहते हैं तो आपको conceptual understanding of some basic terminologies या core technologies जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. अगर आप रिसेंटली आपको चैट जीपीटी का चैट जीपीटी 3-4 का पता होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग के जो आई फील के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, इफ यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, आपको उसकी जो बिगर पिक्चर है, उसकी जो वर्किंग ऑफ द ब्लॉक्स जो है, जो कंपोनेंट्स किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसकी जो मेन वर्किंग है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप किसी के साथ उस पर कम्युनिकेट कर सकें. और आप कभी भी जो है यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट कि आप उसके जो बैक एंड पे जो टेक्निकलिटीज हैं उसको आप वर्कआउट करें. सो ये एक चीज़ है कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है उस एरिया में उसके साथ अपने आप को अपडेटेड रखें. Linear algebra or mathematics statistics is something that is very very important, क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की फील्ड में जब आप आएंगे यू वुड रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप नंबर्स के साथ डील कर रहे होंगे, और इस वजह से यू शुड बी गुड एट नंबर्स. Programming languages जो हैं, it keeps changing with time depending on where you work and what kind of data you are working on. लेकिन कोई भी programming language जो है, if you have good skills, तो वो आप बड़ी आसानी से दूसरे languages में carry कर सकते हैं. Most of us started programming in जो हमारे एज के स्टूडेंट्स हैं, we started with C and C++, and those skills could be easily transferred to any other language that we are working on these days. इसके अलावा जो है ट्राई टू वर्क ऑन योर एनालिटिकल स्किल्स, विच इज बेसिकली कि आपको कोई भी असाइनमेंट अगर दी जाए, कोई भी जो कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस, प्लान फॉर ईच पीस, कनेक्ट देम टुगेदर, और उसके ऊपर जो है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उसके ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा. सो अगेन ये जितनी आपकी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होंगी, इट्स जस्ट कम्स विद प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को
डिफरेंट लेवल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट विद स्मॉलर प्रोजेक्ट्स और आप फिर उसको स्केल कर सकते हैं. यहाँ Again, पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी तैमूर, बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. क्या आपकी स्ट्रेंथ्स मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेसेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इनमें से कोई एक भी है या कोई दो हैं. नॉट नेसेसरीली कि आपको ये सबकी सब स्किल सेट चाहिए. इफ यू आर गुड एट स्टैटिस्टिक्स और इफ यू आर गुड एट डेटाबेसेस एंड नॉट सो गुड एट मैथमेटिक्स, दैट कुड स्टिल वर्क, क्योंकि डेटा साइंस बजाते खुद भी बहुत बड़ी फील्ड है. तो आप इसमें से लाइक दिस इज अ पॉसिबल सबसेट और पॉसिबल सेट जिसमें से आप कोई भी सबसेट सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर इनमें से कोई मेरी स्किल सेट है या मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं इसको लेके आगे चल सकता हूँ और डेटा साइंस का कैरियर अपना बना सकता हूँ. या सॉरी जी, thank you very much for adding that. This is exactly a very good idea कि आप अभी से अपनी स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड करने पे भी उसको जरा ऑब्जर्व करें कि किस चीज में आपको ज्यादा जो है यू फील मोर क्यूरियस और आपको उसको करने में ज्यादा मजा आता है. तो यस, आप विजुअलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट सब डायरेक्शंस के जिसके अंदर आप जाके आप टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, आप जो है डेवऑप्स की तरफ जा सकते हैं. तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंटरेस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसमें जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा. अगेन इट्स नॉट समथिंग कि जो आपको फर्स्ट शॉट में मिल जाएगा. समटाइम्स यू फील कि आपको इस चीज को पॉलिश करना स्टार्ट कर दें. Okay, so again, yeah, with the same on the same lines, finding your strengths. आपको जो आपके डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर जो कोर्सेज चल रहे हैं, so you would have this feeling कि आपको कौन से किस तरह के काम जो है, कौन से कोर्सेज को आप ज्यादा टाइम देते हैं. So that would be a good indication कि आपको पता चले कि आपने फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है. आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे ज्यादा एफर्ट लगाएं, उसको एक तरह से इंटेंशनली इसको ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम, ताकि इलेक्टिव्स पे जाने से पहले मोस्टली आपके जो डिग्री रिलेटेड इलेक्टिव्स हैं दे कम इन द लेटर पार्ट ऑफ योर डिग्री. तो आप वहां पे जाने से पहले अपने इलेक्टिव्स को केयरफुली चूज करें और फिर आपका प्रोजेक्ट जो है या इफ यू आर इन योर मास्टर्स तो आपके जो थीसिस हैं दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इलेक्टिव्स दैट यू हैव स्टडीड, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट्स और जो थीसिस हैं दे कम फ्रॉम द इलेक्टिव कोर्सेज जो ज्यादा sort of जो recent curriculum है उसके साथ ज़्यादा up to date होते हैं as compared to the core courses. तो उसको अच्छे तरीके से पिक करें ताकि आपको अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ से मिल जाए, अच्छा थीसिस का टॉपिक मिल जाए, and then that is probably something के जो आगे भी आप काफी टाइम उस चीज के ऊपर काम करेंगे. Moving on, it's also very important के आप अपने जो जिस चीज के अंदर आप काम करना चाहते हैं और आप जो आपका गोल है, आप थोड़ा सा उसको जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसके साथ भी अलाइन करें, क्योंकि if you are working on a problem that isn't of much interest to people, तो उससे ये होगा कि उसकी जॉब्स कम होंगे, उसके साथ जो उसके से जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके वो कम होंगे. So that overall limits the kind of opportunities that you are looking for. It doesn't mean कि आप अपनी जो इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल उसको 180 डिग्री पे स्विच करें with what is like more trending in market these days, लेकिन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करें कि आपको जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं जिसमें जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है दिस डेज अगेन जिसके अंदर जॉब ज्यादा है, रिसर्च फंडिंग ज्यादा है, सो आप अपने आप को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, विच मीन्स के यू ऑलरेडी हैव कोर स्किल और आप उसके साथ जो सराउंडिंग में जिस तरह से स्किल्स चाहिए आप उसको अपने अपने जो टूल बॉक्स है उसको अप टू डेट रख सकते हैं कि रिसेंट जो है मार्केट में किस तरह की चीजों की ज्यादा डिमांड है. सो स्लाइट मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज समथिंग दैट यू शुड वर्क ऑन, लेकिन अगेन दैट वुड यू हैव टू सी कि आपका जो मेन कोर है जिस एरिया के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर आपको किस डायरेक्शन में स्विच करना है. So to plan your degree program, आपको
you start with core courses, और उसमें again you do not need to be the expert of all these courses, लेकिन वो आपको उस degree program का एक broad perspective दे देते हैं. And we have students के जो उसमें से किसी particular direction जो है उसके अंदर वो बेहतर होते हैं. So again, this is something that would set like sort of a base for you as a computer scientist. और फिर उसके बाद as I said earlier कि आप अपने elective courses जो है उसके ऊपर उसको plant कर सकते हैं और आप वहाँ से ज़्यादा benefit इस तरह से ले सकते हैं. Universities have limitations of resources, तो आपको सारी variety के electives offer नहीं होते. And generally, when even an elective is offered, so they try to cover more broad topics, particularly if you are in undergrad degree. तो अगर आप NLP का elective पढ़ रहे हैं, so that would mean कि more major areas of NLP would be covered rather than getting into the detail of a specific direction. तो ये आपके लिए एक अच्छा starting point तो साबित हो सकता है, but to build more on that interest that you have recently identified, तो आपको काफी सारी चीजें जो है उसको खुद से उसको explore करना पड़ेगा. So electives would give you a direction जिसको आप thesis या projects में आगे continue कर सकते हैं, but आपको बहुत सारी limitations जो हैं that you would still identify कि वो अभी भी आपके अंदर हैं to work in that area, which means कि you need to keep on improving on what you are learning, which is basically going to be covered up in the coming couple of slides. पहली चीज जो ये है कि if you have identified, as I gave you the example of NLP, कि आपने identify कर लिया कि आपने broadly NLP के area में काम करना है, find out people who are working in that area. तो अगर वो आपके somehow contacts हैं from the background, तो that is even better. आप उनके साथ engage कर सकते हैं और आप उनको अपनी learning जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं, which makes it so sort of a social activity. और ये हमारी ह्यूमन साइकी में है कि what you read is something जो आप ज़्यादा जल्दी भूल सकते हैं. If you write it down तो वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मेमोरी में रहेगा. If you discuss it with someone तो वो आपको सालों तक नहीं भूलेगा. So develop such contacts. अगर नहीं है तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे रेलेवेंट इंटरेस्ट के लोग देख सकते हैं. पीपल हु आर एट द सेम लेवल वेयर यू आर, तो वो बड़ी ओपनली ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं और आप अपने डेवलपमेंट्स अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन कम अप विद ग्रुप्स के जहाँ पे आप इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. आप प्रोमिनेंट लोगों को अपने उस एरिया के अंदर रिसर्च लैब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके पेजेस को लाइक कर सकते हैं, उनको पोर्टल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और उससे ये होगा कि वो किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उस रिसर्च के अंदर और रिसर्च लैब के अंदर किस तरह की फंडिंग आ रही है. सो दैट वुड अगेन गिव यू अ मोर a better idea of where market is trending these days. तो आपको जो अभी मैं पहले बात कर रहा था कि थोड़ा सा अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा विद द मार्केट डिमांड, तो वो आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है कि लेट्स से आप NLP के अंदर आपको डीप लर्निंग के अंदर ज्यादा काम करना है, आपको प्री ट्रेंड मॉडल्स पे ज्यादा काम करना है. सो वो आपको यहाँ से वो ट्रेंड पता चलेगा कि मोस्टली किस तरह की चीजें जो है वो रिसेंटली इन है. They also keep you aware of the opportunities. यानी इन्हीं पोर्टल्स के ऊपर, इन्हीं रिसर्च लैब्स की वेबसाइट्स के ऊपर अगर कोई नई जॉब की एडवर्टाइजमेंट है, सो वो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. I again would highly encourage you all कि अगर आप अर्ली स्टेजेस पे भी हैं, keep reading the job descriptions. आपको पता चलेगा कि वो किस तरह के लेट्स से NLP का अगर कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट है एट पर्टिकुलर लेवल, कोई PhD की जो है पोजीशन है या कोई इंडस्ट्री के अंदर पोजीशन है, तो NLP के अंदर एग्जैक्टली कौन सी लाइब्रेरीज मांगी गई हैं, कौन से टूल्स के अंदर वो काम करने में इंटरेस्टेड है, कौन सी लैंग्वेजेस, तो वो आपको वो NLP के अराउंड जो पैकेज है आपको वो आइडिया होगा कि अगर आप आज से 2-3 साल बाद अप्लाई करेंगे तो कौन सी चीजें जो हैं जिस पे आप अभी से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. Again, as I said earlier कि आप ये सारा जो electives और कोर्स से आगे जाएंगे, so most of the time आपको चीज़ों का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, but still that won't be sufficient to keep you working in the industry. तो आपको self learning is something that you should instill in yourself as a habit, और आपको इस चीज़ को more
एम्पावर करना चाहिए अपने अंदर कि आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को लर्न करें, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग की हैबिट डालें, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो अगर आप सेल्फ लर्निंग के लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव दीज डेज इज कि आपके पास ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, यू कैन रजिस्टर दीज कोर्सेज और आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उसको जा सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक कोर्सेज और आप फिर उसमें सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं. यू कैन डू डिग्रीज और आप बेसिकली अपनी कोर्सेज को वन आफ्टर द अदर इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आपकी एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सपर्टीज जो है वो ग्रो करें. सो दिस इज समथिंग दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आप उसको इस तरह से अवेल कर सकते हैं कि आप मल्टीपल कोर्सेज को एक डायरेक्शन के अंदर जो है उसको, आई थिंक दे आल्सो ऑफर सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस के जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने बकेट किया होता है इस तरह के कोर्सेज को जो आपको एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज एक डायरेक्शन में देते हैं. सो दैट इज समथिंग के जो आपके ऊपर है कि आप खुद से इसको प्लान करें और टू प्लान इट इफेक्टिवली आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, तो आप उसके लिए कोई टाइम स्लॉट डिफाइन करें ऑन वीकली बेसिस. उस स्लॉट के अंदर कोई आपके ऊपर जो है कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. देयर शुडंट बी एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, फोन वगैरह, उसको साइड पे कर लें और इन कोर्सेज को रजिस्टर करके इनके कोर्स लेक्चर्स को सुने एंड देन दे हैव दीज एक्टिविटीज और उसके अंदर असाइनमेंट्स हैं. सो उसको अगर आप फुल जिस तरह से आप एक फिजिकल एक कोर्स में करेंगे, अगर आप उसको उस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट. क्योंकि अगर आप कोई MIT का कोर्स कर रहे हैं, कोई स्टैनफोर्ड का कोर्स कर रहे हैं, अगला कोर्स जो है वो आपका मे बी हार्वर्ड का होगा. सो दिस इज समथिंग जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यू वुड जस्ट हैव द रिसोर्सेज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिससे आपको लाजमी फायदा हासिल करना चाहिए. Another good thing that comes with these courses, और मैं आपको personal experience से भी बता रहा हूँ, as I told you in the start कि I have already covered or did some courses from Coursera. तो आपको एक portal मिलता है for interacting with other students. Normally they are in thousands and maybe more than and hundreds of thousands. तो वो जो है whatever the problem that you think you are facing, आप वहाँ पे जाएंगे. So many people already have talked about them और आपको वहाँ से काफी सारे resources मिल जाते हैं. And that also gives you an opportunity के जो मैंने ऊपर आपसे बात की कि आप सोशल मीडिया के में इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करें. सो यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. ऑल दीज पीपल आर एट द सेम लेवल विद यू और ये सारे आप ही की तरह के इंटरेस्ट रखते हैं. तो आप बड़े आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑन दी प्रॉब्लम्स जो आप जिस पे काम कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर कोर्स और सर्टिफिकेट ऑन Coursera और सच प्लेटफॉर्म जो आप उसको लिए फॉलो कर रहे हैं. So I'll conclude by saying work smart, have small, measurable, achievable, realistic and time-based goals ताकि आप जो है अपनी progress को monitor कर सकें. Just registering these courses is something that feels more attractive in the start और फिर आप mostly लोग जो हैं उसको halfway through छोड़ देते हैं because उन्होंने अपने लिए कोई goals, कोई achievable measures नहीं रखे होते कि किस टाइम तक कितना कवर करना है. सो बी मोर लाइक डू दिस थिंग अपफ्रंट कि आप पहले से अपने स्टडी को प्लान करें और फिर अकॉर्डिंगली ट्राई टू एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने टारगेट्स रखे हैं उसको मीट करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू तैमूर. यहाँ पे मैं भी ऐड करूंगी कि मैंने भी जब कैरियर स्विच किया फ्रॉम अदर फील्ड फ्रॉम AI टू डेटा साइंस और बिग डेटा स्पेशली, तो मैंने भी Coursera से कोर्सेज किए टू गेट माई सेल्फ इन टू दिस एंड वी वुड रियली रिकमेंड दैट. क्योंकि अब अगेन एज तैमूर मेंशन कि यूनिवर्सिटीज में हमें बहुत ब्रॉड और बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है. सो आपने जो डेप्थ हासिल करनी है वो आप इन्हीं पोर्टल्स के जरिए कर सकते हैं. गो फॉर Coursera. यूट्यूब पे आपको बहुत ज्यादा मटेरियल मिलता है बट समटाइम्स यू गेट लॉस्ट बिकॉज इतना ज्यादा मटेरियल है. सो Coursera आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपने इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द कोर्सेज जो आप करें until the advanced level. So I can't highlight more कि आपका एक्सपर्ट होना किसी एक फील्ड में बहुत मैटर करता है. So breadth के अलावा आपको डेप्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है because that is something that makes you master and you need to master something to achieve something important. और smart goals as Taimoor has mentioned, अपने लिए छोटे
goals रखें ऐसे that you can measure and you can achieve in a given time. So realistic हो और time based हो कि मैं एक हफ्ते के अंदर 4 lectures complete करूँगा. So that should be your goal. Instead कि मैंने पूरी expert जो है course मुकम्मल करना है. So keep yourself, start small, start simple and develop from there. All right, so this comes now back to developing experience, that once you have your goal and you want to be a data scientist, तो आपने कैसे शुरू करना है? First is you need programming skills. और prominent languages data science में Scala है, Python है, R है. ये तीन ज़्यादा prominent है nowadays. So select one that suits you, that you are interested in. फिर उस library, उस language को लेकर के आप देखें कि tools कौन से हैं, libraries कौन सी हैं. I would rather focus Python more क्योंकि वो ज़्यादा यूज होती है. Python की कौन सी libraries हैं जो ज़्यादा यूज हो रही हैं, जो आपको interesting लग रही हैं. आपको इसका evidence कहाँ से मिलेगा? Existing projects से. Look into the existing projects. OpenAI किस चीज में काम कर रहा है, बाकी जो fields हैं जो related आपके interest से interest की fields हैं उसमें कौन से project, कौन सी language यूज हो रही है, कौन से tools यूज हो रहे हैं, and then try to practice that online. लीड कोड है, हैकर रैंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं. इसी तरह से आप एग्जिस्टिंग वर्क को रिप्रोड्यूस करके वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि रिसर्च पेपर्स हैं, पेपर्स विद कोड आपको मिलता है, या कंपटीशंस होते हैं केगल पे, उनका भी कोड अवेलेबल होता है, डेटा भी अवेलेबल होता है गिटहब पे. यू कैन डाउनलोड बोथ द डेटा एंड कोड और आप अपने पीसी पे वो सारे काम को स्टेप 1 रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. स्टेप 2 फिर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. What you need to do is to practice your problem solving skills. जो आपकी problem solving skills polish होंगी, उतना ही आपका experience और expertise बढ़ेगा. Because programming आपको problem solving सिखाती है, programming आपको resilience सिखाती है, programming आपको critical thinking सिखाती है, और ये सारी चीजें तभी आपके पास आएंगी जब आपने ज्यादा से ज्यादा programming, ज्यादा से ज्यादा hands on किया हुआ होगा. And that hands on, if you're not given that from university, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एक सर्टेन लिमिट है, उन्होंने 50 लोगों को इकट्ठे पढ़ाना है, लेकिन आपकी एक अपनी स्ट्रेंथ होगी, आप उस स्ट्रेंथ को लेके केगल से कॉम्पिटिशंस ले सकते हैं, उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. और जहाँ पे तैमूर ने बात की टू इंटरेक्ट विद द रिसर्चर्स, आपने केगल का कोड लिया गिटहब से, उस पे काम किया, एंड देन यू फिगर आउट कि मैं इसको किसी और तरीके से बेहतर कर सकता था. Therefore you can connect to those developers जिन्होंने उसको डेवलप किया था. You can talk to them, you can discuss with them. आप उनके issues resolve कर सकते हो. That makes you connect. This lets you connect with those people. But this is the hard work that you have to do to get into the field. This is the hard work that you have to do to become an expert of this field. Whichever field you choose, ये almost सब fields पे apply होता है. We're mostly focusing data science or big data here, but this is in any computer science related field. So the bottom line of the slide is practice your problem solving skills and practice as much as you can. Right, and the next step is developing your portfolio. As Taimoor has said, आप LinkedIn profile बनाएं, connect to the people, demonstrate what you know, learn from the people, आप आसपास के लोग क्या काम कर रहे हैं इस field पे, and always remember do's and don'ts of the media. LinkedIn सिर्फ आपकी professional showcasing के लिए है. LinkedIn is not for begging jobs. LinkedIn is not to tell people कि आपकी social life में क्या हो रहा है. It's professional portal. तो आप जब भी उसमें ज्वाइन करें, उस पर कोई चीज पोस्ट करने लगे, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे इन चीजों को डिस्कस करते हुए कि आपने कैसे पोस्ट करना है और क्या पोस्ट करना है. तो ऑलवेज प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल पर्सन. पाकिस्तान के क्या मसले मसाइल हैं, या हमारी सोशल जिंदगी के क्या मसले मसाइल हैं, दुनिया को उससे कोई कंसर्न नहीं है. दुनिया को कंसर्न है कि हमें आता क्या है, हमारा नॉलेज लेवल क्या है. सो जस्ट हाईलाइट दैट and be very professional in your communication with international researchers. वो पाकिस्तानी भी हो तब भी try to be as much professional as you can. All right, so next is GitHub. So showcase your programming skills as we discussed previously. आप केगल के competitions को fork करें, उनको अपने local computer पे reproduce करें, उसमें आपने कोई updates देनी हैं तो make those updates, recommend those changes to the original developer and so on. So आपने GitHub is for your programming skills only.
So your projects, your experience, and your expertise in a certain programming language, in a certain tool. And then you could also join mailing list. They will tell you about the recent trends कि आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, लोग किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, किस तरह की जॉब अनाउंसमेंट्स मौजूद हैं, और आपको क्या उसमें से आता है, और कितना गैप है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में दैट यू कैन बिल्ड. Right. And the next step is be ready for an opportunity around the corner. Keep your resume ready. Keep your GitHub profile updated. अब GitHub profile आपकी continuous effort है. आपने weekly, bi-weekly आप उसमें नए projects डालें, या एक ही project पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसको weekly, bi-weekly उसको update करें, daily update करें. So that it showcases कि आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, आपकी प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज क्या है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक जॉब्स या डेटा साइंस की जॉब्स होती हैं, वो पहले आपका गिटहब प्रोफाइल देखते हैं कि इस बंदे की प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज कितनी है. एंड इट रियली मैटर्स. योर लिंक्डइन प्रोफाइल मैटर्स. Cover letter also matters. It should be carefully tailored to the position announcement. जिसको आप अप्लाई करें उसका नाम की स्पेलिंग का ध्यान रखें, नाम ठीक हो, जिस यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें वो सब ठीक हो. And then comes the interview. Look into the common interview questions, soft skills, and also data scientist based interview questions. Those are the technical skills. ये सारी चीजें आपको in parallel खुद को polish करना है इन सारी fields में. That makes you ideal for a data scientist position internationally. And finally, then apply for jobs. Once you feel that you have enough basic knowledge, you could already start applying for jobs. So don't wait until you feel that you are fully ready, because this fully ready, your perfect time, it may never come. You have to keep applying for jobs that interest you, and with course, with highlight that you know, that you understand, and that you know that you can do, because you have the basic and enough knowledge to do that job. And make this job application also part of your learning. Get familiar with the application process. Okay, सिर्फ deadline पे apply ना करें, उससे 2 दिन 3 दिन पहले apply करना शुरू करें. Start earlier than deadline. Know the process, क्योंकि इनके online portals होते हैं जो बाज़-औक़ात काफी challenging to understand होते हैं. So you need to understand that as well. And also know and learn when certain opportunities are offered. For example, what time of the year. Look into professional writing. आपका resume, आपका cover letter professionally written होना चाहिए. Then interview skills, उसके लिए भी आपको बहुत सारी blog posts मिल जाएंगी, और maybe it calls for another webinar then कि कैसे आप interviews properly कैसे करें. Look into your posture, look into your dressing, a proper room, proper background. That all matters at the end. And finally, get used to rejection. So हर job opportunity जिस पे आपको लगता है कि आप 100% fit भी होते हैं, that may not be for you. So there is always something around the corner, but not everything is for you. So honestly, when I moved from Pakistan to Denmark, एक साल में मैंने तकरीबन 200 से 250 job applications जमा कराई थी. And I got interview for 3 to 4 of them only. So just to let you know कि PhD के बाद भी, publications के बाद भी, there is a challenge. And not everything is for you. So don't take to those rejections personally. There's nothing wrong with you. That is how the process goes. So you have to keep on going. You have to keep on trying, and then it happens. But again, don't lose your professionalism in any of these steps. So success, in bottom line, the success is about patience. It's about performance. It's also about persistence. You have to keep trying to get something. It is also about hard work. You have to work hard, determination, taking risks, disciplining yourself in order to learn continuously and rigorously, and also learn to deal with failures. So that's it from us. Thank you very much. Any questions? Thank you very much, Hajira. We have a couple of questions. Some of the questions were basics, so हमने उनको तो respond कर दिया. But if you can see some of the questions which are mentioned in the QA box, so one by one you can answer to them, please.
Okay, so there is a question. There are many specialization for data science on the Coursera. So one thing जो मैं यहाँ पे आप लोगों को share करना चाहूँगी, okay, so आप जब Coursera पे जाते हैं, I believe कि अब आप लोग मेरी screen जो है वो देख सकते हैं. Okay, आप बिल्कुल home page पे आ जाएं. I believe कि मेरी screen इस वक्त share हो रही है. Yes. अच्छा, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो स्किल सेट्स आ रही हैं, ठीक है. पहला है ब्राउज कैटलॉग, देन द स्किल सेट को क्लिक करें, और स्किल सेट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे काफी ज्यादा सारी स्किल सेट्स आ रही हैं. AWS, Amazon वेब सर्विसेज फॉर द डेटा साइंटिस्ट, डेटा माइनिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, specifically simple data scientist, deep learning for data scientist, then they are forecasting, GCP, Google Cloud platform for the data scientist, then we have the NLP for data scientist, then we have the Python for data scientist. So ये तकरीबन 8 आपके पास स्किल सेट्स बनी हुई हैं. आप इनमें से किसी एक स्किल सेट को जब आप क्लिक करेंगे और उस स्किल सेट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे सारी इसकी रिकमेंडेशंस नजर आ रही हैं. आप व्यू करें इसकी तमाम रिकमेंडेशंस को तो आपको नजर आएगा कि हम मतलब ये कोर्सेरा की तरफ से रिकमेंडेशन है, एक स्किल सेट आपके पास बना हुआ है. तो वो लोग जो ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि हम कौन सा कोर्स उठाएं, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो ये देखें. मतलब यहाँ पे कुछ कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे उनकी टॉप रिकमेंडेशंस हैं. एंड देन देयर इज द डेटा मैनेजमेंट, देन देयर इज द मशीन लर्निंग, देन द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. जैसे अभी मिस हाजरा ने आपको बताया कि आपको कुछ चीजों का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है. तो वहां पे तो आप अपनी बेसिक नॉलेज को करें विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, विद रिस्पेक्ट टू द जर्नल IQ, विद रिस्पेक्ट टू द डेटा रिफाइनिंग, डेटा कलेक्शन के हवाले से, विजुअलाइजेशन के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर टूल और टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है. So over to you, Hajira, now for some of the question answers which we have. Okay. I want to answer a question. Let's say I saw it in some of the questions where to start actually. तो अगर आप machine learning का broad जो problems हैं उसके models देख लें, तो आप अपने लिए एक application area decide करें जिसमें आप ज़्यादा interested हैं. आप images के साथ काम करने में ज़्यादा interested हैं, आप text के साथ काम करने में ज़्यादा interested हैं, या maybe medical data या security का data. So that would give you an idea कि आपने जो डेटा एनालिटिक्स के मॉडल्स हैं उसको किस तरह के डेटा के साथ लिंक करना है, क्योंकि इनके पाइपलाइंस डिफरेंट है. NLP का डेटा जो है टू रीच अ मशीन लर्निंग मॉडल कम्स थ्रू अ डिफरेंट पाइपलाइन. इमेजेस का डेटा जो है वो डिफरेंट पाइपलाइन से होके आता है. सो इसलिए अगर आप पहले से अपने अगेन इंटरेस्ट को डिसाइड करें कि किस तरह का डेटा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, तो उससे ये होगा कि उसके अंदर जो प्री प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से डेटा लेट्स से फिल्टरिंग उसकी किस तरह से होती है, उसको डेटा को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, उसके फीचर्स किस तरह के होते हैं. सो आपको उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ज्यादा नो हाउ होगा विद योर जनरल डेटा साइंस स्किल्स.